oviposition sexes are separate. Fertilization is internal. They are oviparous and development is direct. Example, corvus crow, columba pigeon, or pesticula parrot, stew, ostrich, pest, peacock, eptinodytes, penguin और नियोफ्रॉन वोल्वचर. ठीक है, इसमें सारा कुछ बताया. देखो ऑस्ट्रिच को छोड़ के इसमें एप्स में सभी उड़ सकते हैं, सभी के पास विंग्स होते हैं और सभी मतलब कि उड़ने का वो करते हैं. ठीक है, अब क्लास मैमेलिया की बात करते हैं. दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट. पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट माउंटेन, फॉरगेट ग्रासलैंड एंड डार्क कैप्स. सम ऑफ देम हैव adopted to fly or live in water. The most unique mammalian characteristics is the presence of milk producing gland, mammary gland, by which the young ones are nourished. They have two pair of limbs adopted by walking, running, climbing, breathing, swimming और flying. The skin of, देखो इसमें mammalian में है ना जो इनकी मेमोरी ग्लैंड होती है. ठीक है, जो वो है ना उनके बच्चों को वो है ना उसके थ्रू जो दूध जो नरिशमेंट मिलता है, जो वो मिलता है ना, तो वो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो बहुत उनको मतलब कि हेल्पफुल रहता है उनकी ग्रोथ के लिए. ओके, मैमल्स इज यूनिक possessing hair, external ears or pinus are present. Different types of teeth are present in the jaw. Heart is 4 chambered. They are homeothermous. Respiration is by lungs. Sexes are separate and fertilization is internal. They are viviparous with few exceptions and development is indirect. Example, oviparous, ornithorhynchus, platypus, viviparous, markups, kangaroo और petrobulus, flying fox, camels, camel और macaca, monkey, rat, canis, cat, dog, felis, cat, elephas, elephant, equus, horse, delphinus, common dolphin, balino, petra, blue whale, panthera tigris, tiger, panthera leo, lion. The silent distinct feature of all phyla under animal kingdom is comparatively given in table. देखो ये टेबल है ना, मैंने आपको बोला था दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल और आप लोग इसको पढ़ेंगे एक बार तो आपको समझ में आएगा कि उसकी है ना मतलब जो हमने पढ़ा हुआ है उसी की समरी दी हुई है. आप लोग इस टेबल को पढ़ेंगे और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बोलिए. मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इस टेबल को पहले एक बार रिवाइज करूंगी, इसके बाद वो करूंगी. ठीक है, एक बार हम समरी देख लेते हैं. द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स सच एज लार्वर ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री सेल organization, column, segmentation, notochord, etc. have enable us to broadly classify the animal kingdom. Besides the fundamental feature, there are many other distinct characteristics which are specific for each phyla or class. Porifera include multicellular animal which exhibit cellular level of organization and have characteristics of flagellated canocytes. The coelenterate have tentacles and bear kinetioblast. They are mostly aquatic, sessile or free floating. The ctenophores are marine animal with comb plate. The platyhelminthes have flat body and exhibit bilateral symmetry. The parasitic form so distinct sucker and hook. Escamanthes are pseudo-columnate and include parasite as well as non-parasite roundworm. Annelida are metamerically segmented animal with a true column. The arthropods are most abundant group of animal characterized by the presence of joint appendage. The molluscus have a soft body surrounded by an external callus cell. The body is covered with external skeleton made up of chitin. The echinoderms possess a spiny skin. Their most distinct feature is
is the presence of water vascular system. The hemichordate are a small group of worm-like marine animals. They have cylindrical body with proboscis collar and trunk. Phylum Chordate include animal which possess a notochord either throughout or during early embryonic life. Other common feature observed in the chordate are the dorsal howl, nerve cord, and paired phylangelia gills slide. Some of the vertebrae